guys, welcome again, and let me take the opportunity to introduce our guest for today. So, we have a lifelong learner investor, Kapil Ahuja, with us. So, he's a HNI investor based out in Delhi, and he's handling his own family office that goes by the name Equinox Capital Ventures. So, by education, Kapil is a commerce graduate, and he did his post graduation in textiles, and he firmly believes that the idea of deep diving in the small and SME space, because that is the place wherein the big fortunes are made. So during the course of this session, we'll be knowing his style, how he identify good companies at an very early stage, so that we can also try to incorporate those things within our framework. So, Kapil, a very warm welcome, and I would love to know about your background in the sense like how it all started for you. Thank you so much, Prince, for such a kind introduction. Yeah, I have done my graduate bachelor's in commerce and then postgraduate in textiles because my I have a textiles background and I used to run a weaving plant, German based with German based looms. My younger brother is still handling the plant. So that way, I've been fortunate to be introduced to this plants and all in early age. And this, I'm a second generation investor also. My dad used to invest since 1980s. So I've got all the basics, fundamentals from him. Yes. That's great, and I think it is a blessing in disguise when you have somebody elderly in the family who invest, and you get to learn so many nuances of investing from him or her. That's great, Kapil. So, Kapil, coming straightforward to the framework, I mean, how you are able to identify good companies at an early point in time. So, what is the starting point wherein you get the ideas, and then you further do the due diligence or maybe do scuttlebutt for the companies, how it all started, and especially the area wherein you invest most of your capital is the small and micro cap space, right? Therein Yeah. the information availability is comparatively less. So actually, I've been sector agnostic and market cap agnostic. I've got large cap also in my portfolio, but right now, yeah, I'm more focused on small caps and SMEs where the growth is immense and the CAGR is 35-40% to 100% from last 3 years, and forward earnings forward revenues are also 100% plus. So why not? I thought to why not try them because their base is so small, 50 crore market cap companies, 100 crore market cap companies, and when they are growing tremendously. So we should, when India has to grow from $4 trillion to $56 trillion by 2047, as per EY report. So these companies will only help India to grow, and many more companies will come, and only help India to grow to that level, to that GDP. So I've been reading a lot, and I try to enter the sectors that have tailwinds, like the EPC sector. I've added lately in 2021 when I used to see this Gensol and KPI Green. So I missed Gensol, but I added a little bit of KPI Green. But when the opportunity arose from the Ariana Power, so I grabbed the opportunity open heartedly and with full force, because I saw the opportunity in both previously. So I was fully prepared to grab this opportunity, seeing the promoters pedigree, and they had already done this 100 megawatt capability. They had already done they completed they executed it, and they had orders worth 150 megawatt. So, and after the IPO, and right now they are having 250 plus megawatt orders. So that was it did very good. So, Kapil, how exactly it goes? Like initially, you take some tracking position, or it's like if you get a hold of the company as far as understanding is concerned, or maybe interacting with the management. So, how exactly it goes? Yeah, for SME companies, we try to interact with the management pre IPO only, or maybe post IPO.
if the stock hasn't risen by 3x 4x. So we try to understand the business of the company as much as possible, so that we can allocate good amount with full conviction. So So, that was I invested in a very small company named Pramara Promotions around the 3 years. When the IPO came, it is a unique niche business which is into promotional products and gift items. And these gift items they are making for the world's most renowned brands and across segments. So जो टॉय क्रैक्स में आपको निकलता है that is made by Promara Promotions, or the James Ball of the Cadbury's that is made by Promara, and the inside toys of many chips like Lay's and all. So they do. So I like the business, and I when I understood from the promoter that they have all the design team who conceptualizes the designs on the inputs they receive from the clients, and they had a very good high-tech factory that is certified by international agencies. So because it's all food-based products and you need very stringent, they have very stringent norms. The HASCCF norms are very stringent. And this unit was certified by Mondelez. This was a Kellogg certified facility. So Mondelez gives them a huge business. So I like the clients. Their clients were ITC, Cartoon Network, Unilever, National Skills Development, PepsiCo, Heinz, Pfizer, and it was available at 60 crore market cap. So I thought that let's take a position here. So I added slowly, and it took me around 2 months to make a position there. Yeah, and then we got corporate announcements of Burger King giving them a 2 million pieces order, and now they have raised funds for working capital for the Burger King orders. And now the tailwinds that I found in this business was that government's focus was in made in India toys, and this company was now starting to do toys. And secondly, their mostly plastic products were now being their focus was now more on the paper based products and the non plastic ones. So and their order book was also increasing, and now currently their order book is 100 crore plus. So I thought that this is the good company to stay invested in for another 2 3 years perspective. Yeah. so Kapil, when it comes to interacting with the management, so how to screen the management in the sense like it could be a possibility that the management is shrewd and trying to sell a story wherein the business doesn't support the story, especially not in the short term, but again, they can extend few quarters with that. In that case, like what, how does the screening criteria you keep in your mind, or how exactly it goes when it comes to interacting with the management? See, for the smaller companies or for the mid companies, we need to see if the promoter is walking the talk, if the revenues are growing as per his commitments, or if not, then what were the reasons behind it? Was there was any increase in raw material, or there was any subdued demand? So we need to see if the promoter is walking the talk or not, and if not, then we need to exit with a loss. And you, yeah. Mostly with the smaller position, yeah. Right. So, Kapil, you talked about the EPC theme in the year 2021. So that time it was not the hot theme, or maybe just the start of the theme. So whenever like something is not into momentum at that point in time, mostly there is an opportunity cost to the capital, right? And we Yeah, have right. seen that early 2024 or late 2023, these EPC companies had done very well. So how you condition yourself behaviorally in those scenarios when you're the certain investment you make, they do not perform for an extended period of time. See, when the stock doesn't perform, that means that we are telling the market that what we like. So those are value buys for us. When we want to listen to the market and hear what market likes, that is momentum investing, right? So the EPC theme was all about order books.
Now the huge order books that were building in this electricity generation, be it renewables, then transmission, distribution. So one could easily see that the order books are huge and execution will play out, and we need to enter the right companies that can do the execution in a fast manner, like KPI Green is executing so well, even in this electrification, Bondada or Constellic, the smaller SME companies have been doing very, very well. So mostly EPC companies are doing great in private space. Yeah. But Kapil, like if we talk about EPC companies in a normal layman language, basically there would be consolidation in that space, and of the all the players available, there would be few good players would be remaining, and the profit pool will lie with them. Do you buy this statement, or across the board the EPC companies will do good? How you see that? See, I am seeing the companies that are in my portfolio, and they are doing extremely well. And overall, the demand is huge, and the capability and the skills are very good here. So they are doing extremely well. Now, solar has been doing great. Now, the green hydrogen EPC will also come up in another 4 years. So we need to see that also, and we need to allocate our capital there also. Seeing these solar guys will only do the green hydrogen also. So we need to see who can do well, and then we can allocate. And I also see like you have good allocation to certain hotel companies also. So would you like to throw some light on those investment, like when you made those investment, and what was in the back of your mind exploring that space? Yeah, actually, I made an investment in a very small hotel company with the name of Asian Hotel East, and that time my assumption was that let's park some funds in REIT. So I selected this because it was giving yield more than the REIT. But then the special situation played out, and the Asian Hotel East got demerged, and there was robust hotels. One we got a mirror shareholding in that company also. First, we got the bonus in Asian Hotel East, 100 shares or 1,000 shares became 1,500 shares, and then 50 we got 1,500 shares more of robust Hotel East. So it played out really well, and it was an asset heavy business. Because it had their own hotel, and when the sector tailwinds are there, then heavy businesses do very well because they don't have to pay any royalty, and they don't have to do any revenue sharing like EIH has done. The Oberoi brand, they are asset heavy, and they have their own hotels, so their operating leverage is huge. Indeed, and there is one more play we have had discussion when we met, food and ends, right? And right now also some special situation is brewing, or you can say it was there a few weeks ago. So would you like to throw some light around that investment, food and ends, right? Yeah, the food and Indies was also a very niche play that was doing a that has a mango pulp business, and their 87% of their top line is derived from mango pulp that they supply to the Coca Colas of the world for the Maza brand, for to the ITC, Parle, and all the other MNC and global companies in Japan, Europe, Australia, and America. So that was a good play, and it has given tremendous returns. It has already a 50% CAGR in last 3 years, and now they are diversified into frozen foods also. Now they have done their waste. They have set up a plant for waste conversion into pectin. Pectin is a chemical that is a natural chemical that is a substitute for gelatin, that is a animal based uh, product. So it is a natural substitute for it, and it is used in cosmetics and all. So, and others business also, they have spray dyeing business. And the special situation that has played out is that the promoter has given an open offer, and they have increased their promoter stake has been got increased. So, and
They have got some huge amount of money from the warrant conversion also. Now the Madhu Kelaji and Cyrus Matthew have converted their warrants, and the working capital issues would be solved, and the expansion and the capex will revive in the food and next year 3 years, next 3 years also they'll be doing tremendously well. And I forgot to give the disclaimer that these companies, I have position in it, and I'm not a SEBI registered advisor, and these are risky times. So take your own call, and these are only for educational purposes. Yeah. Yes, very well said by Kapil. And the investment horizon and the time when he invested, the price that was different from today's time. So Yes. that habit has to be kept in your mind. We are discussing purely so as to understand the framework. So recently, like you have also talked about zinc oxide play, which has been listed very recently, right? So would you like to throw some light on the about the space and total addressable market. What made you explore that space? Actually, the company that I explored was JG Chemicals, and I knew the management from when it was unlisted. So it's a Calcutta based, and it is the largest manufacturer of zinc oxide in India. And this zinc oxide is mainly used in for tire manufacturing, and they have the power to negotiate for the best prices in India for zinc oxide, because zinc oxide is mostly imported, and they then value add it, and then they give to this. Uh, they actually procure ingots, and then they process it and they supply to tire manufacturers. And they have recently diversified into agrochem also as a nutrient and a additive in this agrochemicals also. And for foods also, the zinc is also used. And for they are also starting a factory in Gujarat for ceramics. So this ceramic use of zinc oxide will give a huge uh, revenue boost to their top line. So that ways I invested in this, and it was available cheap below the IPO price. The IPO came at around 220, and I entered below the IPO price around 200 or even less. So it's a safe play for another 2 3 years. Yeah, but the growth in it will be around 15 to 20% only in top line in next 3 years. Yeah, not like So the any, Pramara Promotions or the other SME companies which are hopefully give around 100% returns. Yeah. any sense on the margin profile of the company so that we get a sense that if the top line grows with say 15-20%, how much of the margin expansion can we see in the bottom line, if any sense around that? The EBITDAs are around 10 to 12% only, and their ceramic unit will give them EBITDA margins of around 12 to 13% only. So their consolidated will be around 11%. So on the top line of around 1,000 crores, they can easily do around 5 to 6% PAT. Yeah. Fair enough. So So Kapil, that is the cheap. Yeah. okay, yeah, fair point. So, Kapil, when we have access to the management, right? So, in that case, how much of edge or extra information you believe is available to investors, or that is fairly same for all the categories of investor. Do you find any edge when it comes to when you're holding some stake, some extra information, or it's like more or less the same? Friends, for SME companies, you can say that you get a little edge, but not for mainstream This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. companies, because whatever they are telling us, they are that is already disclosed in public domain. Yeah. So Kapil, one question. So basically, not everybody in the call is HNI, and there are low ticket size investors also, and they also have aspiration to invest in the small SME space. So how would you advise, or what would be your advice in the sense like when the capital is limited? Because when the capital size is big,
you can fairly diversify by investing in a number of companies, right? But for small investor, the capital size allow one or two investments, that two of one or two lots, right? In that case, how one should progress in the SME space? What would be your advice on that? माय एडवाइस वुड बी कि अगर आपके पास उस सेक्टर की नॉलेज है तभी एसएमई में जाना चाहिए, अदरवाइज नॉट. Otherwise, you should read the DHRP, understand the business, understand the competition, कितना उसका total addressable market है, उसका business कितना easy है to scale, क्या उसके moats हैं, क्या उसमें entry barriers हैं, और तभी you should start allocating in it. And बी माइंडफुल कि जब अपना आईपीओ ही लिस्टिंग ही 5x 4x हुई जैसे आज एक कंपनी में हुई है विंसॉल में, तो वी शुड रिफ्रेन बाइंग दीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पोलिटेड कंपनीज. वी शुड अवॉइड दीज कंपनीज, या बिकॉज रिवर्जन टू मीन तो आएगा ही, और उसके बाद जब वो गिरेंगे तो वी कांट डाइजेस्ट द लॉसेस देन. So there is one company in the sewerage space also. So वहाँ पे क्या thought process था, और water treatment और इस segment में क्या लग रहा है going forward? Do you believe I mean, जब तक बिल्कुल पानी का जैसे बैंगलोर में situation आया, that kind of situation happens across the board. Do you believe that government is very serious about it? Yeah, government has to be serious because whole of most of the India is now water scarce, और इंडो गैजेंटिक प्लेन्स तो वैसे ही बता रहे हैं कि it is going to be very difficult in times to come, in decades to come. So water theme तो I've always loved it. I used to have ion exchange from 2013-14. तो उसमें when वाटिक वाबाग also I used to have 3-4 years से हमने रखा हुआ है. So EMS is into basically into sewerage and civil construction of these sewage lines and for एसईटीपी प्लांट्स. तो इसका थोड़ा यूनिक बिजनेस है, और सीवरेज में दे गेट हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अराउंड 28% इनको उससे मिलता है. तो इट्स अ गुड बिजनेस. इट्स आल्सो ए काइंड ऑफ ईपीसी प्ले ओनली. दे गेट टेंडर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. दे आर मोस्टली डूइंग फॉर यूपी गवर्नमेंट, and then they execute it, and they have been executing well over past 8-10 years. Yeah. Right. सो कपिल, मिस्टेक्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं. ऑब्वियसली एवरीबडी मेक्स मिस्टेक, और मार्केट में तो वो चलता ही रहता है, बट एसएमई स्पेस में और स्मॉल स्पेस में एनी मिस्टेक्स योर माइंड व्हिच यू मेड, और उनको कैसे आपने यू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स? एक अगर हमारा जैसे ओरियाना पावर या वेबसोल या चलता है तो उसके पीछे 10 मिस्टेक्स भी होती हैं. तो आई हैव stuck my capital in tea sector. I made losses in tea sector, and और भी काफी कंपनीज हैं जिनमें लॉसेस हम करते रहते हैं, और वी एग्जिट. या वी लर्न फ्रॉम इट एंड देन वी एग्जिट. और सो कपिल, आई मीन, कोई भी इन्वेस्टमेंट रहता है, देयर इज सम बैकिंग ऑफ सम थीसिस और सम आइडिया कमिंग फ्रॉम अ गुड नेटवर्क काइंड ऑफ थिंग, राइट? So how much of time you give to the investment before cutting your losses? मतलब कैसे रहता है exactly? अगर अगर अपना ये प्रमोटर हमारे को नहीं बता रहा प्रॉपरली और नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा, तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन उसके. यू नीड टू सी द कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ रहे हैं नहीं आ रहे, और दे हैव बीन नेगेटिव, और इट इज कंटिन्यूइंग बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग डेट एवरी टाइम. तो वी नीड टू सी द रेड फ्लैग्स एंड देन वी शुड मोस्ट प्रोबेबली एग्जिट. ये नहीं पा रहा, या इसके इसके जो मॉडल है दैट इज प्रोन टू डिसरप्शन, और प्राइसिंग पावर ही नहीं है उस बिजनेस में, या फिर कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस है. तो या फिर अब जैसे न्यू आता है कि एकदम से ऑडिटर चेंज हो गया जैसे इतनी कंपनीज में हुआ, या फिर उसने रेड फ्लैग्स दे दिए कि ऑडिट ऑडिट ओपिनियन उसने नेगेटिव दे दी, या सडन एग्जिट हो गया किसी टॉप मैनेजर का, या कोई डिस्क्लोजर्स देना उन्होंने कम कर दिया हो, और लग रहा है कि हाँ बोर्ड में कॉम्पिटेंस नहीं है. तो देयर आर मैनी फैक्टर्स कि एक्सेसिव मैनेजमेंट कंपनसेशन इज आल्सो वन फैक्टर कि भाई ह्यूज ही इज गिविंग ह्यूज रेम्यूनरेशन टू हिज सन्स एंड डॉटर्स एंड फैमिली, और काफी सारे. और व्हेन द promoter is boastful,
of his management. So these are red flags, and then we exit. There is no harm in exiting. Yeah. एक और चीज कपिल, आजकल जो आईआर के साथ बहुत सारी कंपनीज, देयर इज आई मीन मे बी, मुझे थोड़ा कम आइडिया हो, बट आई हैव सीइंग अ ट्रेंड दैट कंपनीज आर कमिंग टू द इन्वेस्टर्स एंड ट्राइंग टू one side is like they are explaining about their business. Second potential thing we can assume is they are like selling a story. Both things could be possible, right? There are good companies, there are not so good companies. तो उस Yeah. केस Well में said. क्या Yes. 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 तो उस केस में क्या लग रहा है, लाइक इन्वेस्टर्स कैसे सेग्रीगेशन बनाएं? बिकॉज देयर कुड बी अ पोटेंशियली नॉट सो गुड बिजनेस, बट द प्रेजेंटर ऑफ दैट बिजनेस कुड बी अ गुड ओरेटर, गुड प्रेजेंटर काइंड ऑफ थिंग, राइट? एंड पीपल गेट इन्फ्लुएंस. तो कैसे बचे यार इन सिचुएशन? तो धंधा समझ के आओ, जाना तो जरूरी जरूरी है। जब भी आईआर का मीट होता है तो धंधा समझना तो बेस्ट है ना। यू गो टू फेस विद द प्रमोटर, और कुछ तुम पढ़ के जाते हैं, कुछ क्वेरीज लेके जाते हैं, तो ही इज देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द क्वेरी की क्यों उसकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कम आ रहे हैं, क्यों उसने डेट ज्यादा लिया है, या फिर मैनेजमेंट कंपनसेशन क्यों इतनी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेट प्रॉफिट की। तो जाना तो बहुत जरूरी है, और उसके बाद जाके एक भाई समझ लो, उसके बाद सीधा प्राइस मूवमेंट सी की उसके क्या क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं। तो जब तक, और क्या पता जब मार्केट ड्रॉ डाउन हो जाए और वो काम अच्छा कर रहा हो तो वी कैन एंटर। तो जाने में देयर इज नो हार्म, सीखने में, सेक्टर का सीखने में, वो अपने कंपटीटर का भी बताता है, अपने बड़े कंपटीशंस का भी बताता है। तो आईआर में भी जाना चाहिए, एक्सपोज में भी जाना चाहिए, प्लांट विजिट्स भी करने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। वट एवर यू कैन डू टू गेन नॉलेज, यू कैन डू, यू शुड डू। एंड कपिल, मतलब ऑब्वियसली ठीक है, डिमांड सप्लाई का गेम है अभी। प्री आईपीओ में वी आर सीइंग दैट मेनी कंपनीज आर लाइक, आईपीओ आ रहा है 10 करोड़ का और उनका सब्सक्रिप्शन 500-600 टाइम्स हो रहा है. दे आर डूइंग देयर प्री आईपीओ शोज इन वेरियस बिग सिटीज और कॉलिंग फॉर बिग इन्वेस्टर्स एंड एचएनआईज. तो मतलब ये सुपरफिशियल एक तरीके से डिमांड क्रिएट करने वाली बात है, और इट्स लाइक द ट्रेंड इज नॉर्मल सिंस ओल्ड टाइम्स आल्सो, या अभी सब चल रहा है तो इस टाइम पे ज्यादा हो गया? नहीं, नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है ये, एंड वी शुड अवॉइड दिस। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम वाले अपने कंपनीज ले ली पोर्टफोलियो में, और थोड़ी वैल्यू वाली कंपनीज भी लो कि जो तुम्हें अच्छी लग रही हैं और जिनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, जिनके आगे ग्रोथ ठीक आ रही है, और मेन बोर्ड में बड़ी कंपनीज हैं जो, तो वो भी लेनी चाहिए। वाई टू रन आफ्टर दीज एसएमई आईपीओस। अब यार 35 से 100% सीएजीआर की बात होगी तो वी गेट इनसाइट एक्साइटेड, और यू कैन से lured by those kind of returns. Anyways, that is well नहीं, taken. So वो Kapil, तो वो तो हमारी आईपीओ की जो आ चुकी है, उन कंपनीज में ज्यादा टेलविंड्स आ रही है ना। जैसे एक छोटी कंपनी है क्रिएटिव ग्राफिक्स, वो उसने अब अगले 3 साल का 100% का उसने सीएजीआर दे रखा है। वो फ्लेक्सोग्राफी प्लेट्स में है, न्यू टेक्नोलॉजी है, फार्मा पैकेजिंग में भी है वो। तो फ्लेक्सोग्राफी का लीडर है, लार्जेस्ट लीडर है। तो ऐसी कंपनीज लो, डब्ल्यू टी आई कैब्स देख लो आप, डब्ल्यू टी आई कैब्स इट हैज बीन ग्रोइंग 100% ईच ईयर फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स, और आगे भी 35-40% उसका ग्रोथ का उसने क्लियर विजन दे रखा है। तो व्हाई नॉट गो विद दिस कंपनीज जो पहले लिस्ट हो रखी हैं, और जब कभी अभी मार्केट गिरी थी तब हमें एंटर करना चाहिए था इन कंपनीज में। लॉ सीखो भी देख लो आप, इट्स ऑनलाइन कोर्स fair प्लेटफॉर्म, point. और इट इज डूइंग There, ट्रिमेंडसली वेल। ये भी 100% ग्रो कर रहा है, इसका धंधा भी। इसके ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी बना चुका है, ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब जो खर्चा इसने करना था वो ऑलरेडी इट हैज प्लेड आउट, द एक्सपेंसेस हैव बीन प्लेड आउट, और कॉस्ट आर अपफ्रंट वो कर चुका है कोर्स डेवलपमेंट में। तो अब तो उसको बस मार्केटिंग ही करनी है जो वो कर रहा है, और अब अच्छा ये सेल ग्रो करेगा। तो ऐसी कंपनीज क्यों ना देखें। और जरूरी है कि नए एसएमईज में हमने रोज एंड एसएमई, मैंने तो कभी एसएमई में आईपीओ में अप्लाई ही नहीं किया कभी। जब हो जाता है तो देखते हैं। rest और कौन कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं कपिल, which you think EPC and power, transmission and distribution you already discussed about. Apart from that, any good sectors to your mind where we have good tailwinds or visibility? तो पावर जनरेशन के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन भी होगा। जब जनरेशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन की कंपनीज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल।
ट्रांसमिशन में जो लेटेस्ट टावर्स बना रही हैं या फिर जो ट्रांसफार्मर वाली कंपनीज हैं, दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल। तो सबसे पहले अपार इंडस्ट्रीज चला था, उसके बाद वी गॉट एम्पल टाइम टू एंटर दिस शिलचर, और ट्रेल तो लास्ट में चला है। तो तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ तो स्मार्ट मीटर्स की कंपनीज हैं जो आगे, इनके पास ऑर्डर बुक आज की सेल का 4-4 5-5 टाइम्स है। अगर 300 करोड़ की इसकी सेल है तो 1500 करोड़ के उनके पास ऑर्डर बुक्स हैं। तो बाकी सेक्टर्स, इफ यू talk to ask me, solid waste management I like a lot, biotechnology, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं, मीट ऑल्टरनेटिव्स बहुत अच्छे हैं। जो हम नॉन वेज खा रहे हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स इन बायोटेक्नोलॉजी, जो जीन से मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर जो वेज हैं, जो वेजिटेरियंस का जो उन्होंने मीट ऑल्टरनेटिव बनाया है, दैट इज़ वेरी गुड। आगे एआई, क्लाउड, आईटी में बहुत चलेगा। बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक, ब्लॉकचेन वाली कंपनीज चलेंगी। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इज ऑल्सो गुड, बायोफार्मा, तो बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं। और अगर वैल्यू में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस इज चीप राइट नाउ, केमिकल्स, सर्टेन पॉकेट्स ऑफ फार्मा, दे विल डू गुड। सो एक ऐसा पोर्टफोलियो हो जो एक मिक्स हो, मोमेंटम भी हो, वैल्यू भी हो, और आगे जो सेक्टर्स नेक्स्ट डिकेड के लग रहे हैं उनमें भी हमारे को थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए। तो मिक्स एंड मैच है। Fair point. कैंसर रिसर्च भी बहुत बहुत अच्छा करेगा। तो प्रेसिजन मेडिसिन, कैंसर रिसर्च, अब सारी फार्मा कंपनियां जो कर रही हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस स्पेस एंड वी शुड स्टार्ट एलोकेटिंग, या So investing में, if I ask you one thing which is the most important thing, what it would be? इन्वेस्टमेंट में पर्टिकुलर वन चीज तो नहीं कह सकते। देयर हैज टू बी अ बुके ऑफ ऑल, की भी उसमें क्या एंट्री बैरियर्स हैं, क्या उसकी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, क्या उसका प्रोमोटर पेडिग्री है, कितना उसका स्किन इन द गेम है, ओनर ऑपरेटर बिजनेस है कि नहीं, बिकॉज दैट इज द सोल इन द गेम। उसका बिजनेस हाउ हार्ड इट इज टू रेप्लिकेट, कितना एडमिरेबल कॉर्पोरेट कल्चर है उसका, और हाउ इट इज फाइनेंसिंग इट्स ग्रोथ। ROIC उसकी देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की एबिलिटी है उसकी सेल्फ फाइनेंस ग्रोथ की, कि डेट से ही वो ग्रो करेगा। कितनी गवर्नेंस अच्छी है, वैल्यूएशन, फिर आफ्टर ऑल एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन वैल्यूएशन, या रीजनेबल है कि नहीं। तो सब कुछ देख के वी शुड एंटर, नॉट वन। So when it comes to capital allocation, so what all we see, मतलब कैसे गेज करें कि किस तरह की कैपिटल एलोकेशन को हम अच्छा माने या किसको सब ऑप्टिमम, और कौन सी ऐसी कैपिटल एलोकेशन होगी वी कैन कॉल कि दिस इज नॉट राइट फॉर द बिजनेस? कैपिटल एलोकेशन, अगर वो अपने, वी शुड मैच द पियर्स, जैसे लास्ट 2012 में पावर सेक्टर थर्मल पावर वालों ने किया कि पर मेगावाट उन्होंने जितना कैपेक्स करना चाहिए था उसका 5-5 गुना उन्होंने उसको ओवर बिलिंग करी, और तब पूरा का पूरा सेक्टर डाउन हो गया। तो वी शुड मैच विद द कंपटीटर कि भाई उसका पर मेगावाट कॉस्ट कितना आ रहा है और कंपटीटर का कितना आ रहा है। तो दैट वे वी शुड बी वेरी एजाइल, और ताकि हमें गलत हम कंपनी में ना फंस जाएं। हमने रिलायंस पावर्स और रतन पावर 2012 की हमने साइकिल में देखा कि GMR भी, GVKB की, इन्होंने कैसे मिस एलोकेट किया, या और ऑन द अदर हैंड JSW एनर्जी और इन सब ने बिल्कुल सही प्रूडेंट वे में किया। तो कंपटीशन से मैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right. And we often see that within the one business segment we see, तो नॉर्मली कोई अच्छा धंधा चल रहा है उसमें अच्छा कैश फ्लो है तो फिर प्रमोटर को थोड़ी बहुत चुल मचती है, एंड ही और शी गोज इनटू सम रियल एस्टेट और सम अनरिलेटेड बिजनेस. So that is again, I think, need to be checked या परफेक्ट, on या that. वो डाइवर्सिफिकेशन, क्या डाइवर्सिफिकेशन करता है, तो वी नीड टू बी वॉशियस, यस यस, वी नीड टू बी। तो So रिस्क, Kapil, like we often meet when it comes to networking. So how you think networking has helped you in investing, or networking का हम judicious use कैसे कर सकते हैं so as to improve upon our investing?
तो नेटवर्किंग में एवरीबॉडी एवरीबॉडी जैसे आप हो फ्रेंड्स, आपका एक पर्टिकुलर एक फोटे है एक सेक्टर में, मेरा एक फोटे है, तो जब मेरे को फाइनेंस का कुछ कंपनी समझ आता है तो मैं डीप उसमें डाइव करने के लिए अपने फाइनेंस के नेटवर्क वाले के पर्सन के इन्वेस्टर के पास जाता हूँ ताकि वो मुझे अच्छी तरह समझा सके। फार्मा के लिए आई हैव सम, फॉर फाइनेंस आई हैव फॉर सम, ईपीसी के लिए कोई और है, तो आई हैव अ डिफरेंट नेटवर्क फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट, ताकि मुझे अच्छी तरह समझा सकें। तो दैट वे नेटवर्क प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर चीज हम नहीं समझ सकते, और आजकल तो 10-10 आईपीओज रोज आ रहे हैं, तो और अलग अलग सेक्टर्स के आ रहे हैं। तो अब मेरे को नहीं पता था लॉ सीखो, और ये प्लेटफॉर्म एजुटेक प्लेटफॉर्म जो आगे इतना ग्रो करेंगे, तो मुझे इनकी नॉलेज नहीं थी, बट आई गॉट द राइट कॉन्टैक्ट और देन आई अंडरस्टूड द बिजनेस फुल्ली। और जब प्रोमोटर से मिलके भी हमें और समझ आया, क्योंकि वी ऑलरेडी न्यू। तो network that way is very important. Yeah. Right. And when it comes to like portfolio construction, so how you have constructed your portfolio, and going forward also, like how you maintain the asset allocation and diversification within that the portfolio. तो मैंने जैसे आपको प्रिंस पहले भी बताया कि मैंने वैल्यू और मोमेंटम दोनों मिक्स किए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। सिर्फ वैल्यू रख लूंगा तो कोई ग्रोथ की तो बुल मार्केट हम मिस कर लेंगे कि बुल बुल मार्केट में आजकल डार्लिंग्स क्या हैं, ये सोलर ईपीसी हो गए, ट्रांसमिशन की कंपनीज हो गई, और डिफेंस हो गया, रेलवेज के पॉकेट्स हो गए। तो अगर हम इनमें इनमें से थोड़े से में नहीं आएंगे तो फिर हम वी कैन मिस द बुल मार्केट। तो और वैल्यू वैल्यू भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा मैंने केमिकल में भी रखा हुआ है, फार्मा में भी रखा हुआ है, और इन मोमेंटम प्लेस में भी मोस्ट 50% अराउंड मैंने रखा हुआ है, ताकि माई CAGR इज मेंटेन्ड। और उसी तरह से मैंने SME में भी अपना एक 25% पोर्टफोलियो का रखा हुआ है, तो और मैं इससे ऊपर नहीं जाने देता, और इसी में मैं शफल कर लेता हूँ। और SME में भी मैंने जो अच्छी कंपनीज हैं उनको रखा हुआ है। और याना पावर वॉज SME जो जिसने आज इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अभी रिसेंटली टैग इन्फोसेक आया था, दैट इज वाज इनटू साइबर सिक्योरिटी, तो वो भी एक बड़ा निश बिजनेस था, तो आई एंटर दैट आल्सो। WTI ट्रेवल्स आल्सो, क्रिएटिव ग्राफिक्स आल्सो। तो तो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सेक्टर्स हमने देखे और उनको आइडेंटिफाई किया, और फिर हमने थोड़ा उसमें एलोकेशन बढ़ाई। जैसे मैंने आपको प्रमाणा प्रमोशंस भी समझाया, तो बड़ा निश बिजनेस था, तो आई एडेड इट। और ये नहीं कि हमने सिर्फ छोटे ही ले रखे हैं। तो वी हैव ईपीसी में आई हैव SW सोलर, दैट इज अ लार्ज कैप प्ले। तो वी हैव एलोकेटेड इन लार्ज कैप्स आल्सो। तो एक मिक्स एंड मैच रखा हुआ है हमने। So Kapil, मतलब although nothing against any geography or so, but अगर मैं geographical wise बात करूँ तो which areas in our country you find the companies are more compliant, more honest, or are there any areas? Obviously, you can refrain from answering if it appears not so well with you. But कुछ ऐसा है क्या, या ये segregation करना is not the right approach? ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अप्रोच तो दैट इज रॉन्ग, या क्योंकि अगर अगर आपको कोई हैदराबाद की खराब कंपनीज है तो नहीं हैदराबाद की नहीं, बहुत my अच्छी my my कंपनीज भी हैं। पंजाब की खराब yeah कंपनीज है yeah तो my पंजाब मतलब बोंडाडा भी हैदराबाद से मिली है, लॉरस भी हैदराबाद की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब की भी बहुत अच्छी कंपनीज है, दिल्ली की भी बहुत अच्छी कंपनीज है, गुजरात की भी। तो ऑल इंडिया में यू शुड सी कि उसमें कितना यू कैन डू द स्कैटल बट उस कंपनी में, उस प्रमोटर पे, एंड देन यू कैन ऐड अपॉन इट। या I mean, this question came to your my mind because like I see many people in the network ना, they have a perception अच्छा वहाँ की कंपनी अच्छा नहीं लेना ये लेना, मतलब obviously when it comes to investing there should not be any place of any hard feelings or hardcore mentality about it. Anyways, so anything else, Kapil, you had in your mind, because मैंने तो जितने questions थे उससे ज्यादा ही पूछ लिए हैं, तो anything which देखो, you had in your mind and राइट yet नाउ to ask. मार्केट फॉर स्मॉल कैप्स इज एक्सपेंसिव। अगर एक्सपेंसिव है तो इट इज रिस्की। तो राइट नाउ मार्केट्स आर वेरी वेरी रिस्की। तो बट अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो कंसीडर कि 50,000 का ही है। दैट वे यू कैन, जब गिरेगा तो यू यू आर नॉट शॉक्ड। तो आगे लेकिन जैसे जिस तरह से ग्रोथ हो रही है
और अगर हम वी आर इन द राइट सेक्टर्स एंड इन राइट कंपनीज, द ग्रोथ विल बी इमेंस. क्योंकि आज इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, इनोवेशन इज हैपनिंग रिलेंटलेसली, डिजिटलाइजेशन इज हैपनिंग एट बुलेट स्पीड, और एंटरप्रेन्योर्स की जो जील है, जो एंथुजियाज्म है, जो एनर्जी लेवल है, तो वो आपको प्राइवेट कैपेक्स में दिख ही रहा है. यू कैन सी इन द प्राइवेट कैपेक्स. फर्स्ट पहले गवर्नमेंट ने किया, नाउ ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें कैपेक्स इज नॉट हैपनिंग. और एनवायरमेंट, बिकॉज एनवायरमेंट इज सो conducive and policy and investment climate is good, so we should stay invested, but drawdowns आते रहेंगे जैसे अभी आया है और आगे भी आते रहेंगे. तो रिस्क तो है ही, बट नहीं, अभी मोटा भाई ने बोला तो सभी ने जो कह रहे थे कि वी आर इन 100% कैश, आज वो कह रहे हैं फुली डिप्लॉयड, तो लग तो नहीं रहा करेक्शन आएगी. एनीवेज, any great, Kapil थोड़ा अच्छा, like the family office you handle it standalone or you have a team with you, how exactly? yeah, I have one two research analysts with me. Yeah, so so we discuss the ideas and then we do the scuttlebutt, और अलग अलग हम अपने वो स्पेसिफिक वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और देन वी डू द वर्क एंड देन वी एलोकेट. क्योंकि आजकल रीडिंग और ये इतना ज़्यादा से हो गया है, तो अकेले नहीं मैनेज हो पाता. Totally agree on that. So Kapil, it was a lovely interaction. Really liked. I mean, one of the candid conversation I can call, and definitely आगे भी अपन करते रहेंगे. Thank you so much for taking out time. And once again, as Kapil was also saying, by no means any company is being endorsed or anything against any company, and the companies in which he is invested, the investment horizon is different. The time period when he invested was different from today's time, so definitely that has to be kept in your mind. And with that caveat, I would close for today. Thank you so much for taking out time, and it's always a pleasure. Kaushik, you had anything Thanks a to say? lot I friends, mean, thanks a lot listeners. मजा आया. We discussed lot of so sectors, lot of Kapil, companies. Yeah. एक सवाल आ गया है कौशिक, if we can take that. Kaushik, you there? I think Kaushik. Anyways, thank you so much, Kapil, and lovely interaction. We'll upload the interaction once I get a hold of the recording. Thank you so much. Thank you friends, thanks a lot. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. 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 Download your spaces today.